ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। Hari Om. Hari Om and welcome to today's satsang. We are having Bhaj Govindam after a gap of almost a week, if not exactly. So, a few minutes to recap. As usual, I start. Yeah. Episode recording to some of because we are so lost in Tattva Bodha that we kind of see what is the last verse we did. So we did 8 and 9 last time. I'll come to that. So you see, this text is so wonderful. It's giving, Bhaj Govindam is giving very hard-hitting messages in a very lyrical style. Yes. You can almost chant your sorrows. And it is dealing a hammer blow to all of them in a very sweet manner. So, but after every verse, he is screaming out loudly, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Moodhamate. He is calling us a fool every time and telling us, seek God, seek Govind. And we have discussed who is this Govind. Govind is your Atma. Govind is Paramatma. Govind is Brahman. So if you are doing through your body, you can know him through Karma Yoga. If you are doing it with your mind, you can know him through your bhakti. If you are doing it through your intellect, you can know him through Gyan. Anilji, is your internet connection okay? Yeah. Okay, you can hear me now? I switched from phone to computer. That's all right, because it keeps on flashing that there is some problem in network, so I just checked. I thought maybe you can't hear me. Okay. So, with these three, he is saying, by body, mind, intellect, through Karma Yoga, through Bhakti Yoga, through Jnana Yoga, seek Govind. Because what is Govind? The only permanent, eternal truth. All else being ephemeral, transitory, and momentary. Now the question that comes up is, why are we unable to seek and find Govind? What stops us? I think this question I have asked time and again in my satsang, whether it was Sadhana Panchakam or even here, but I would still like to keep asking, because that is why we are meeting and that is what satsang is for. The idea is not to complete a text or read a text, not an intellectual exercise. The idea is to check what is stopping us from bringing the text to life. So, anybody would like to share what is stopping us from seeking the eternal? I think it is our day-to-day mundane activities and caught up in this outside world where we tend to forget that we let the world around us run us rather than let us, take charge of our life. So I think this kind of an introspection opens our doors and windows, and we are willing to look within and realize what is true happiness and which is our ultimate goal. That's what we started with. So, can you read this verse 7, the meaning only, not the Sanskrit, because that may be difficult.
Can you read the meaning of the seventh verse? Okay, one sec. I'll The English translation only. yeah. I'll just 1 minute, huh? No, take your It's time. not. Take your time. Yeah. The seventh one says, जब तक व्यक्ति धनो प्रजान में समर्थ है, तब तक परिवार के सभी उसके प्रति नहीं. प्रदर्शित. This is not seventh. This Next is one? Yeah, next one. This is sixth. I think it's the Hindi numerals that's confusing you. Okay. जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक. No. अच्छा. बालस्तावत बचपन में खेल में रुचि होती है, यही वाला ना. बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवती के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिर जाते हैं, किंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता. ठीक है. This is what you were trying to say. Yeah. No, not really. I meant, yeah, in a way, yes. We at every stage we have some issue. I won't say issues. They're things that keep us occupied. But what we forget is the most important thing, which is Time. Bhaj Govinda. So he's saying that. No, I'm just pointing out the crux. He's saying you have time for everything at different stages of life, but nobody has time for Bhaj Govindam. Huh? Yes. Alas, nobody has time for that. So this is what you are also echoing. Yes. What Yes. Shankaracharya has mentioned in verse number 6. No, sorry, 7. So now what is the antidote? Pratipaksh bhav. How? Because ये तो time निकल जाएगा. ये तो निकल जाएगा. Yeah, we can just keep cribbing about it and lamenting about it, but Earlier he has said, Nalini dalgat jalmati tarlam. Your life existence is as uncertain and as fragile as a drop of water on the lotus leaf, which is, अगर वो झटके से नहीं गिरेगी तो सूरज उड़ा देगा. तो उसके तो टाइम आ ही गया. बिल्कुल. तो अब क्वेश्चन ये है, आर वी रेडी टू बिलीव व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग और वी थिंक दैट इज फिक्शन? No, definitely. That's why we are so eagerly awaiting every class. So, question is, still we are far away. Anil ji, your thoughts? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो पूरे संसार में ज़्यादातर लोग सुबह शाम इंक्लूडिंग अस, हमारा सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, बाकी इसमें कोई इंटरेस्टेड है नहीं. तो सारा दिन जो हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में लिप्त है. इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, जैसा भगवान भी कह रहे हैं. और हम अगर आधा घंटा भी ये बात करते हैं और सिर्फ अगर इसको हम कैरी थ्रू नहीं करेंगे और हम पूरा दिन वैसे ही जिएंगे कि मैं ये शरीर हूँ और जो वो है कि मैं ये होर्ड करूँ, जो अभी तक इन्होंने सब कुछ कहा है कि धन को हमें जमा करना है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, तो जीवन तो पूरा मन जो है और जीवन वैसा चल रहा है. तो ये समझ में आने पर भी जैसा अनु जी ने बोला, हम भूल जाते हैं, क्योंकि 23 घंटे तो हमारा ये चल रहा है, 22 घंटे ये चल रहा है. So, ये जो सत्य जो भगवान कह रहे हैं और अपने जीवन के भी लिमिटेड अनुभव से ये लग रहा है कि ये तो सच्ची बातें हैं कि शरीर कभी भी जा सकता है, और इसमें इन चीजों में जो भी सुख है ये एफिमेरल है, हमारा खुद का ये शरीर, और जो हम ये जमा कर रहे हैं और जो ये रिश्ते हैं, तो स्थायी चीज तो ये है, एक ही है जो लॉजिकल लगती है.
और जब कभी आदमी शांति से बैठता है तो जो अंडरलाइंग सबस्ट्राटम वाली बात है वो इंटेलेक्ट के लेवल पे तो महसूस होती है, और या जब विचार बंद हो जाते हैं चाहे एक क्षण के लिए भी, तो वो जो अंडरलाइंग कौन चैतन्य है बिना विचार के भी वो है। लेकिन क्योंकि सुबह शाम हम लिप्त संसार में हैं, और इस तरीके की बात करने वाले, जैसे अभी मैं ऋषिकेश गया जो 4 दिनों के लिए, तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई, 2 छोटी बहनें और छोटे भाई की वाइफ भी थी और शालू भी थी मेरी वाइफ। तो वहां पे जैसे कुछ हम लोगों ने सत्संग भी किया, तो थोड़ी देर बाद वो छोटा मेरा भाई कहता है, यार भैया हमारा दिमाग इतना नहीं चलता है यार, हमसे जो है इनको डिस्कस करने दो लोगों को। और बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई बहन, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं हम अपने फ्रेंड्स में जो है ना, हम जो बातें करते हैं लोग फिर थोड़ी देर बाद हमसे इंटरेस्टेड नहीं रहते हमसे बात करने में, तो हमको भी इतना ही दो, हमको हमारा जीवन हमारे तरीके से जीने दो। तो जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वहां भी और हमारा खुद का भी, तो पूरा दिन आचार विचार तो वैसा हो रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं शेयर करूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि सत्संग का ये प्रभाव होगा कि हम जैसे जहां रुकने गए, तो जिस रिट्रीट में हम रुके, जिस जगह पे, उसका जो ओनर है वो मेरी दृष्टि में अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन वो शायद गुरु भी बनने का उसका बहुत इच्छा थी। वो पहले दिन ही हम लोगों से कहता है कि मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, आप प्रभु से कनेक्ट कराऊंगा, मैं आपके सिर पे यहाँ हाथ रखूंगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। इस तरीके की वो बातें कर रहा था। Anil ji, can you give me 1 second? I'm sorry. There's somebody at the door. As I said, I'm alone. Sorry. Sure. अनिल जी, आप रिट्रीट में गए हुए थे? जी, ऋषिकेश में गया था। रिट्रीट थी कि हॉलिडे थी? नहीं, ये एक योगा करके योगदा करके एक होटल में उन्होंने बनाया हुआ था पैकेज, ओके, जिसमें वो योगा, मेडिटेशन, हवन, ओके, आयुर्वेद के ये सब कर रहे थे। ओके। तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। हाँ, आई एम सॉरी अनिल जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी। तो मुझे फिर वो इस तरीके से बात कर रहा था कि पुराण भी श्रुति है। तो मैंने उनसे थोड़ा ये कहा कि भाई मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने तो जो समझा है वो ऐसा नहीं है, तो मुझे आपके ऊपर जो है वो दीक्षा लेने का भाव नहीं बन रहा है। और फिर मैं वो रूम छोड़ करके चला गया। शालू और मेरे सिस्टर्स और ब्रदर और भाभी बैठे रहे, बट उन्होंने भी उनसे दीक्षा लेने से मना कर दिया। और फिर हम सबकी राय ये बनी कि हम अनजाने में जैसे इसके पास आ गए, द प्राइस विच इज ही इज चार्जिंग, और जिस तरीके का मेडिटेशन और वो सब वो करवा रहा है, इट इज नॉट वर्थ इट। तो ये राय बनी कि भाई एक तरफ ये लग रहा था कि भाई बीच में ऐसे छोड़ के जाना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ ये था कि भाई इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, वी हैव कम हियर, इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, लेट अस हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम। मैंने कहा उसका दिल नहीं दुखाना है, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया और जो वो डिलीवर कर रहा है उसमें काफी गैप है। तो फिर मेरे छोटी भाभी ने, जिसने ये किया था, उन्होंने उनसे बात की, एंड वी मूव्ड आउट इनटू अ न्यू प्रॉपर्टी। तो ये चीज सहजता से हो गई। इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि जैसे जो वेदांत भी कहता है कि सब में प्रभु है, प्रभु करवा रहे हैं, तो भाई ये है कि
वन पार्ट इज कि हमने ये किया था, अगर उसको बुरा लगता है तो हम वी विल कंटिन्यू एंड वी विल स्टे पुट, उसका दिल दुखा के हम नहीं जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पर ये जो सत्संग और ये बातें हो रही है, इसका शायद मेरे इस निर्णय में, मेरी इस बातचीत में जो मैंने अपने छोटे भाई और भाभी से और की और उन्होंने किया, ये उसमें इसने दिया। ऐसा मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग वेयर दिस नॉलेज हेल्प्स अस नॉट ओनली बाद में जो होगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, बट अभी भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तो उसको डील करना शायद अच्छे से होगा। I also agree. I think this is helping us navigate life better manner. जैसे आपने कहा किसी को दुख नहीं, हम अपनी ड्यूटी करते रहें, बाद में उससे हम we should not at least do anything on the wrong, कोई कैसे भी कर रहा है करने दो, because we are not responsible for it. In one of the verses we read, no, we are only responsible for ourselves. So I think that's nice. This is what our learning is. तो आपके प्रश्न में मैंने थोड़ा आगे कर दिया अरुण जी, मैं आगे चला गया, शेयरिंग भी थोड़ी कर दी। आपका प्रश्न था कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इस सत्संग को अगर इंटरनलाइज हो रहा है तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना कि भाई ये कुछ लार्जर फोर्स है, उसकी प्रभु के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो मैं अपना करूं, फिर जो हो, अगर रुकना है तो रुकेंगे, चलना है तो चलेंगे। Good. Anilji, what I am listening to both of you is what I have also experienced. With these satsang, I am able to sit in a situation and be clear about the objectives. What you just now said, what came to me was you were clear that this was not your objective, and therefore you were able to have a very clear conversation. We came with a different objective. So I think that is a tremendous achievement in our lives, because हमारे को लाइफ में जो भी मैंने वर्ष दोबारा पढ़वाया अनु जी से, हम एक मैकेनिकली लाइफ लीड करते हैं विदाउट बीइंग क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारी सब कॉन्शियस में डे टू डे लाइफ में ये क्लैरिटी आ रही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, नंबर वन। नाउ हैविंग सेड दैट, वी हैव ऑल्सो टू बी वेरी वेरी क्लियर that our objective is realization of the truth. Now realization has to be understood in a way that we are the truth, but since we do not know, apraptasya prapti, since we do not know, the day we know, that will be realization. So it is that realization is being used in that sense, not that you have to go and look for it somewhere. You already are that. Now I am inviting both of you to a proposal. 5 minutes immediately after getting up from bed, pan out what you are going to do today in a manner that places you near Govind. Before you start your routine, 5 minutes on getting up from bed, just give it that thought. Okay. Arun ji, please repeat. I said, on getting up from bed every morning, give yourself 5 minutes and ask yourself, what am I going to do today to seek Govind? If you are already doing it, then you are only reconfirming to yourself. If there is something you can do, you make a mental note of it in those 5 minutes. Okay. At the end of the day, when you are going to sleep, ask yourself, could you do what you had said you would do
early in the morning. Right? Every day morning and every day at night, do this simple exercise. If you want, you can share. If you want, you can write it down. You can have a diary of how it is helping you seek Govind. What are the pitfalls you are having? Anilji, any questions? No. Please do that. I'll also do it. You also do it. It is my ardent wish that Shankaracharya, who's done so much for us, we repay his debt by adopting what he is teaching. Most important, whatever we are reading, whatever we are hearing, we must have faith in it. The point is, it may not be immediately clear. For that, read more, hear more, question more, but do not doubt. Maybe you have understood wrongly, question. But do not doubt the words of the scriptures or of the Guru. Inquire sincerely how what I have heard or read is going to make positive meaning and be a part of my life. Done? Yes. Great. So, I just thought of it. Maybe it works, maybe it doesn't, but we'll keep. This is satsang. So, we have already read the mahatva of the importance of satsang in verse 9, which is where we left off. He says that in just 4 steps, satsang will remove your moh, it will establish you in Nishchal Tattva, and it will lead you to Mukti. So it's such a simple thing and it comes only from that. Right? So we can move on to verse 10. Any questions? थोड़ा सा अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा जब मैंने कहा नथिंग, बट अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. को उठ करके हाँ. within an hour of getting up, I sit for my meditation. हाँ जी. So उस समय I start with this. No, I don't think you should not mix the two. Do your meditation, because that will change the color of meditation totally. It will become for 1 hour. Because once you start this question, it will go on. So just ask yourself for 5 minutes, what are you going to do for seeking Govind? Whatever answer comes, just make a mental note of it, and at the end of the day, in the evening, you ask whether you did it or not. And then do your routine work, whatever you are doing. But keeping that in mind, this is what you had promised to yourself. During the day, whenever you can get time and whenever you think, just pause in your life and ask yourself, am I following what I had set for myself? So either you will be able to live it out or not live it out. We'll discuss it if you want, otherwise we will resolve it. ठीक है ना? बिल्कुल. चलिए. So I am reading the 10th verse. I think we have done justice to all the verses. In case you are able to go through these, the commentary of Gurudev, and you have any questions, we can take it up next time. Incidentally, this commentary on Bhaj Govindam was written by Swami Chinmayananda in the book that is published by Chinmay Mission. He wrote with his own hands. So, and the original manuscript handwritten is preserved by Chinmay Mission. This is what I understand. So, it is not a very light commentary कि कहीं talk दिया वहाँ के recording है or something. He spent time on it. Okay. I am reading the 10th verse. वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह का सारः क्षीणे वित्ते कह परिवारः ज्ञाते तत्
तत्त्वेकः संसारः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्कृन् कर्णे. Hari Om. I am not asking you to repeat because echo gets created in a meeting. Would you like to repeat it by putting yourself on mute, or should we continue like this? You can continue, Arunji. Okay. जब the recording na, I go through that in that. Okay, good. ठीक है. So now, व्यसी गते कह काम विकारा. Bhagwan is saying, when the youth is gone, Vyasi gate, gate is gone. Kaha kam vikara, where is that lust and its expression that was playing truant with you when you were young? When you are aged, you may have lust in the mind, but the expression disappears. So he says, where has that disappeared? Shushke neere kaha ka sara. Neere is water, shushke is dried up. So if the water has dried up, where is kaha ka sara? Ka sara is lake. So where is the lake when the water has dried up? It may have a base, it may have a tank, but water is not there and therefore there is no lake. Shine vitte kaha parivaro. Once the money and the wealth disappears, shine is, it evaporates. The right word he has used is, it is reduced. He has used the translation reduced, but yeah, erosion is another synonym. So when the wealth is eroded, then where is the retinue that came with it when the wealth was there? You had parivar, you had friends, you had servants, you had so many things. Where has it disappeared? Jnate tattve kaha samsara. Once the knowledge dawns, where is the samsara? So it is time also. I'll expound it next time. And unfortunately, there is another door. There is somebody else. So I'll just chant the closing verse, prayer. We'll take it up next time. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. Thank you very much for being part of the satsang. May the Lord's blessings be upon all of us in reaching our destination. Hari Om.